and as the third class employee, my lord. And my lord, after 30 years from the post of the assistant fisheries officer, my lord. assistant fisheries officer. My lord, third class employee, my lord. And after 30 years, my थर्ड lord. क्लास एम्प्लॉय नहीं कहते, क्लास 3 एम्प्लॉय कहते हैं। My लेकिन lord, सब थर्ड क्लास एम्प्लॉय तो बहुत ही my lord, derogatory हो जाएगा। class 3, my lord. क्लास 3 एम्प्लॉय, My lord, employee. And after a lapse of 30 years, my lord, he started one of recovery, my lord. बताइए इनको बोला था। He was retired on 31/3/84, my lord. टेंशन ना ले And the कहाँ डिटेल्स बताइए सर, वो डिटेल्स आ गई फाइल का सर। फिर इसमें आ गई डिटेल। इसमें निवेदन ये था साहब कि रिटायर होने के बाद पीपीओ जारी हो जाता है, उसके बाद पेंशनर और बैंक की लायबिलिटी होती है सर। देयर इज नो रोल। अच्छा, तो बैंक के लिए कौन आ रहा है? जी बैंक। हाँ, बैंक ने तो ये कहा कि गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो कर रहे हैं। बोला ना मतलब इन दिस रिगार्ड। कहाँ है कागज आपके? जी सर, आ गए। नहीं, आपके अधिकारियों को इतना तो कोर्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, दे शुड रिमेन प्रेजेंट इन टाइम। सर फाइल हो गया, इसको रख लें सर। कहाँ है कॉपी दीजिए। तो इसमें नहीं लगी, कल फाइल हो गया है। ये ओआईसी है जी। क्या फाइल किया है आपने? आप भी रिटायर होंगी, आपको इस बात का अनुमान है कि आप पूरे टाइम नौकरी में रहेंगी? नहीं सर। Then why you are harassing a retired person? सर मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि डिपार्टमेंट से सर 1989 में रिटायर्ड हो गए थे सर। पीपीओ उनका जारी हो गया था। और पीपीओ जारी होने के बाद में सर जो पेंशन बनती है सर बैंक से बनती है, और जो कटौती जो हो रही थी सर उसमें विभाग का कहीं कोई अच्छा, आपने कहा है? ठीक, सर, चलिए सर देखिएगा। श्री ये बैंक का सर है। पुष्पराज सिंह गहरवार, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। my lord, श्री मानस my मुनि submission वर्मा is- जी। my lord, I am relying upon this judgment. जजमेंट अभी नहीं, पहले फैक्ट्स। My lord, sorry, my lord, sorry. श्री मानस मुनि वर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, अलॉन्ग विद, आपका शुभ नाम बताइए मैडम? शशि प्रभा धुर्वे सर। श्रीमती शशि प्रभा धुर्वे दुर्वे, जी। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस। नेक्स्ट पैरा। श्री कपिल दुग्गल फॉर द रिस्पोंडेंट बैंक। नेक्स्ट, श्रीमती शशि प्रभा दुर्वे, Joint Director Fisheries, submits that the state has never directed the bank to make any recovery, and once PPO was issued in favor of the pensioner in the year 1989, when he attained the age of superannuation, thereafter no recovery is proposed by the state government. Full stop. It is strictly between bank and the pensioner. Next, Shri Kapil Duggal. May I address on that? हाँ बिल्कुल, अभी आपको सुना कहाँ मैंने, अभी सुनूंगा ना आपको। जी बताइए। Please have a reply me. जी, Reply on behalf of respondent number 5. respond number 5. 5. Just a minute. Yes. Lord, please have paras 3 and 5 of my return, and then I'll take your lordship to the state's annexure. Contention is para 3 at page 3. जी पढ़िए please. Further, the quantum and calculation of amount of pension to be paid to the petitioner is also to be determined by his employer. जी. That is respondents number 1 to 4. And answering respondent is merely the executing authority which credits the amount of pension in the bank account of the petitioner. Then para 5, Lord, that however the Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance, DOPPFI, Department of Finance, Government of Madhya Pradesh, with its letter dated 8/1/2019, intimated manager CPPC Punjab National Bank that it had scrutinized the case of pensioners of Madhya Pradesh and had found that excess payment was being made to some pensioners, and recovery was to be made from the cases where excess payment was being made. A sheet was annexed to the said letter which contained the details of the amount of pension paid and which should have been paid, thereby highlighting the excess amount made to the petitioner. And accordingly, recovery of amount paid in excess was required to be made. Annexure R2 दिखाइए. Yes, please have annexure R2. Start from page 14. Please see, Lord, this is issued at the top, Lord, by Sanchanalaya Pension Provision Bureau, Madhya Pradesh.
There is the sheet and The sheet thereby, my lord, starts at page 70. तो कितना अमाउंट इन्होंने रिकवर करने के लिए कहा? The total amount is, my lord, I just 3,57,245. जी इसमें कितना प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है? पूरा प्रिंसिपल है इनके पास। पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। आप तो बोल रहे हैं कि विभाग ने कुछ कहा ही नहीं। सर ये डिपार्टमेंट पेंशन वाला अलग है, फिशरीज के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा। ultimately it's a state government, my lord. मध्य प्रदेश शासन ये विधि कमिश्नर पेंशन के लिए कौन अपियर हो रहा है? रिस्पोंडेंट नंबर 3 के लिए क्लियर तो हम होते हैं, पर इन दिस रिगार्ड माय लॉर्ड देयर इज नो इंस्ट्रक्शन। आप बुलवा लीजिए कमिश्नर साहब को, लिखिएगा उसके आगे लिखिएगा। श्री दुग्गल, कपिल दुग्गल, reading from his return submits that it was Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance which had issued a DO to the bank dated 8/1/2019, directing it to make recovery of the amounts shown in the enclosed calculation sheet, which shows recovery of rupees 3,57,245 to be made from the petitioner. Full stop. अभी तक कितनी रिकवरी हो गई आपके पास? 56,000 वो interim order हो गया था तो फिर 56,000 हुआ था, उसके बाद स्टे होगा। अच्छा ठीक है, full stop. Thus, stand of the Directorate of Fisheries that the state government has not made any recovery, appears to be needs further clarification in as much as Directorate of Pension, Provident Fund and Insurance, Government of Madhya Pradesh, Finance Department had not even bothered to endorse a copy to the parent department, had not bothered to endorse copy of Annexure R2 to the parent department. Full stop. Next paragraph. How a recovery could have been imposed after 30 years of retirement of pensioner is to be brought on record by the respondent number 3, Commissioner Pension. Full stop. Let affidavit, personal affidavit of Commissioner Pension be filed, failing which Commissioner Pension, Sadhana Enclave, Phase 2, Hoshangabad Road, Bhopal shall remain personally present. Let affidavit be filed by 10th April, list on 11th April. My lord, after passing the stay order, my lord, he was required the amount, my lord. Then, my lord, I filed a content petition. That is, kindly, my lord, साहब अभी वेट